Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. And I'm Shafiq Ahmad Channa, your English language teacher. सबका पहिरों त मां तव्हांजे पॉजिटिव रिस्पॉन्स, तव्हांजी डेडिकेशन, तव्हांजी हार्ड वर्क, तव्हांजा जेके व्यूज़, क्वेरीज़ and comments लाइ थैंक्स कंदुसि that you show your keen interest in learning new concepts and asking many questions and they are quite relevant. त मूंखे पहिरों त ॾाढी ख़ुशी थी त तव्हां सभु स्टूडेंट्स सिखी रहिया हो, पढ़ी रहिया हो, असांखे सवाल बि कयो था, क्वेरीज़. So it shows your dedication. I'm really happy to see your utmost response in these coming days. अगर तव्हांजी यही तव्हांजो support रही, cooperation रही, तव्हांजी dedication, so we can make this program more better and we will learn more. So we all are learner here. त कल असां डिस्कस कयो हुयो सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट, उन जा कुझु रूल्स डिस्कस कयासीं, कुझु यूज़ेस ऐं उन में इंफिनेटिव ऐं जेरंड बि डिस्कस थियो. तव्हांजा क्वेरीज़ जेके हुयूं उन सभिनी मूं जवाब ॾिना ऐं हिकिड़ो सवाल आयो हुयो कमेंट में. आई थिंक सो ईसा खोसो कमेंट कयो त सर हाउ कैन वी इम्प्रूव अवर वोकैबुलरी ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. हाणे सभ खां पहिरियों त जेकी तव्हांजी सिनोनिम ऐं एंटोनिम जी वोकैबुलरी आहे इहे इम्प्रूव करणु, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर कॉम्प्रीहेंशन. तव्हांजे पेपर में हिकिड़ो पोर्शन आहे आफ्टर कॉम्प्रीहेंशन यू विल बी गिवन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. हाँ, synonym and antonym जितनी तानी vocabulary सुची होती, you can improve, you can learn, it's better. पर practice makes man perfect. Practice करो तो उन लाइ मां तव्हां सां हिकिड़ो book share कंदमि जेको you can write my WhatsApp number, you can text me along with your name and city. वो मां तव्हांखे जेको आहे सो book PDF में अॼु मोकिले छॾियो फाइल. असांजो ग्रुप बि आहे SSDP जो, I will include it to you. So write down number 0300 9372262. I repeat 0300 9372262. In a message kare sabota and then I will send you a very good book of synonym and antonyms. Practice karo tamam to book ahe, you will improve your vocabulary inshallah. Now let's start today's topic, sentence and types of sentences. ठीक है. So let's start with the sentence type. Sentence are basically types. Functionally, sentences are of mainly 4 types. In writing and speaking, there are 4 basic types of sentences that we use for different purposes. Types of sentences and functionally, अगर सारा functions ॾिसूं त उनमें उहे 4 categories में divided. Number 1, declarative. Number 2, interrogative. 3, imperative. 4, exclamatory sentence. हाँ, ये 4 types हैं, पर functionally. These different kinds of sentences in English allow us to express ourselves clearly. जॾहिं असांखे ख़बर हूंदी त कहिड़ो सेंटेंस कीअं लिखणो आहे या कीअं उनखे यूज़ ॻाल्हाइणो आहे, असांजो writing and speaking skills improve थी वेंदा. Using a variety of sentences in your writing will aid interest and help you get your ideas more effectively. अगर जे तव्हांजी writing सुठी हूंदी, you know the types of sentences, त तव्हांजे जेके ideas आहिनि सभु तमामु clearly थी वेंदा. To communicate clearly, it is important to know the function of each type of sentence so you can make the right choice depending on your purpose. अगर तव्हां चाहियो त असां बहितर ॻाल्हायूं, असांजी communication effective हुजे, त असांखे इन types of sentences जा proper use ख़बर हुजनि. So now let's start. There are 4 types: imperative, declarative, exclamatory, and interrogative. And सबका पहिरों declarative sentence. Declarative sentence is also called assertive sentence or statement sentence. Declarative के असां assertive sentence भी चवंदा आहियूं. Now let's start. What is declarative sentence? A declarative sentence is the most basic type of sentence. Its purpose is to relay information and it is punctuated with the period. हाणे declarative sentence वो sentence आहे जंहिंमें का असां statement बयान करना हो, वो कोई sentence जो type आहे जंहिंमें complete information हूंदी आहे, complete thought and sense हूंदो आहे. इहो sentence full stop ते ख़तम थींदो आहे. We give full stop at the end or a period. Full stop is also called period. So
A declarative sentence, or you can say statement or assertive, is a declarative ja name hai, and we end the sentence with a full stop, or we can say period. For example, the boy walked home. I write a story. He wants to eat cookies, but he doesn't know how to make them. And so ये JK sentences is just simple sentences, declarative and statement show the. And you can see that these certain make statement with either of fact or opinion. इनमें को fact आहे या को opinion आहे, पर ये बिल्कुल simple sentences. Declared sentence can be simple as in the first two examples or compound as in the final example. हाणे पहिरियों ऐं ॿियो जेको जुमिलो आहे इहो डिक्लेरेटिव आहे पर ई सिंपल सेंटेंस आहिनि. टियों तव्हांजो जेको आहे उहो सिंपल सेंटेंस आहे पर इहो कैटेगरी में अचे थो कंपाउंड. इहो असां अॻिते डिस्कस कंदासीं. They can be also in any tense as long as they do their basic job of presenting information. This makes them the most common sense type. Now, you have first kind, tanjo, declarative or assertive. Now, second type of sentence is interrogative sentence. And just you know, interrogative means interrogation. So, interrogative sentences interrogate or ask questions. These are direct questions and they are punctuated with a question mark. For example, उहे जुमला जंहिंमें को सवाल पुछो वञे उन्हनि खे असां interrogative sentence चवंदा आहियूं. ऐं इन में punctuation means at the end of a sentence we use question mark. Why does the sun shine? Whose dog is that? Will you go to Hyderabad? What is your name? May I know your good name? What are you doing? So each sentence is interrogative. Many questions start with these questions, question words like WH word bonan, question word. When, where, why. The inner statement it means it is interrogative. But others are yes or no question that begin with the word instead of the noun. It is important to remember that interrogative sentences still require a noun and a verb to be complete. Interrogative sentence के complete थियण लाइ लाज़मी आहे त उते word या noun हुजे त जीअं उन meaning complete थिए. Are you writing a letter? त इहो बि example थी थो जो interrogative sentence. So a statement that starts with interrogative word, question word, and end at the question mark. The punctuation आहे question mark, and this is interrogative sentence. These are Nalimais are interrogation, to interrogate, to ask something. The third type of sentence is imperative sentences. Imperative sentences do not simply state a fact, but rather tell someone to do something. And imperative sentence just simply a statement a statement that my name is Shafiq Ahmed Channa, or I am writing a story. In simple sentence simple fact or opinion to do something. These can be in the form of friendly advice, basic instructions, or more forceful command. In simple, I say the imperative sentence उहे हूंदा आहिनि जंहिंमें command या request हुजे. असां कंहिंखे का request कयूं या कंहिंखे असां को order कयूं त इहे ॿई imperative sentence जा part आहिनि. To give command, to order something, or to request. The request and command or sentence जेके हूंदा आहिनि उहे imperative हूंदा आहिनि. For example, please shut the door to keep out of the bugs. So in a jumle mein agar maine ke un tone mein padha to you will come to know whether it is advice, request, or order. Order means command. Please shut the door to keep out the bugs. Please shut the door to keep out the bugs. And please jeko na asan pretty polite request karna hai. Un lai please listen to me. Please speak slowly. Iu jeko ahe request. अगर खाली हो जाए shut the door तो वो command थी मने मना करी order थी मने तो ये बात आनी request. Turn left at the bridge और ये तांजो थी सके तो command. Stop bothering me. ये थी तांजो command. असां के चवंदा मूंखे तंग न कर means हुकुम था दी या command.
हाणे तव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि नोट कई हूंदी the third sentence of imperative ends with the exclamation mark. हाणे इहो कीअं? there is difference. Many imperative sentences end in periods. माना जेके इहे जुमला हूंदा आहिनि उहो full stop ते ख़तम थींदा आहिनि. Full stop means period. But some of the more forceful demands may end in an exclamation point to highlight emotion. You can identify an imperative sentence because it appears to missing a subject. So in में तव्हांजी ॿिनि शयुनि में तव्हां नोट करे सघो था इट इज़ इम्परेटिव. सभ खां पहिरियों त इहो हिकिड़ो इमोशन शो थो करे, स्ट्रॉन्ग इमोशन. इन करे असां हिते एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ कयो आहे. अदरवाइज इम्परेटिव सेंटेंस एंड्स एट फुल स्टॉप. हाणे हिते असां यूज़ कयो स्टॉप बॉदरिंग मी. हाणे असांजो मक़सदु हिते आहे जस्ट टू we can reinforce or we can see that to highlight emotion. इन्हीं करे असां ॾिनो आहे. Otherwise इहो ऑर्डर ई आहे या कमांड. That's the reason. And another difference is that we got not कयो त इनमें subject कोने. हाणे अगर मां चवां त stop bothering me, shut the door, त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उहो त subject हूंदो न. कंहिंखे चइबो आहे त मोस्टली you हूंदो आहे. You stop bothering me, you shut the door. ठीकु आहे. तव्हां इनमें subject बि न हूंदो आहे त तव्हां इन मां अंदाज़ो लॻाए सघो था कि it is imperative sentence. However, the command of each imperative is directed at you, making these sentences second person. You जेको आहे उहो second person आहे. It means it is subject which is invisible or it is understood. The subject of the sentence may be omitted, but it is called you understood because the reader is aware that each sentence could be written as you do this, you do that, you stop bothering. The enemy subject जेको आहे सो hide थियल आहे, but we know it is understood it is you. So this is imperative sentence. I repeat, उहे जुमला जंहिंमें command या रिक्वेस्ट हुजे उन्हनि खे असां imperative sentence चवंदा आहियूं. Fourth is exclamatory sentence. Exclamatory sentences. And exclamatory sentences are like declarative sentences in that they make a statement instead of asking a question, but their main purpose is to express strong emotion. हाणे असां ॾिसूं त इहो बि declarative या स्टेटमेंट वागुरु तकरीबन सिमिलरिटी आहे इन सेंटेंस में, पर फर्क इहो आहे त जेके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आहिनि उन्हनि में असांजी स्ट्रॉन्ग इमोशन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस, सैडनेस और सरप्राइज हूंदी आहे. माना असां इन में पंहिंजूं स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऐं इमोशन्स शो कंदा आहियूं. उन मां ख़बर पइजी वेंदी आहे त इहो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आहे न कि डिक्लेरेटिव. They are easily recognized because they end in an exclamation point instead of a period. But इन्हनि में full stop नहीं ईंदो आहे, इन्हनि में exclamation mark, इन्हें खे सच नाम exclamation mark वो यूज़ थींदो आहे. पर किन किन केसेस में असां वो किथे imperative में यूज़ कंदा आहियूं, पर वो के feelings के emphasize करण लाइ, strong feelings लाइ. Otherwise through the emotion, feeling, अगर उहे sudden feelings आहिनि like happiness, sadness or surprise, उनमें तव्हां यूज़ करे सघो था. It is exclamatory. How well Shafiq sings. Though I cannot sing, I am not good at singing. We're singing nahi diya, मैं पंहिंजो नालो यूज़ कयो. Just how well Shafiq sings. Shafiq कितरो सुठो ॻाईंदो. हाणे मां अचानक हिकिड़ी फीलिंग शो कयूं. How well Shafiq sings. Wow, he just won a gold medal. हाणे ॾिसो ॿिन्ही सेंटेंस में at the end असां exclamation mark यूज़ कयो आहे. हाणे अगर सेकंड सेंटेंस आहे एक्सक्लेमेटरी वर्ड ना हुर्रा या हु वाओ, ठीक है, ई होना अल्लाह ओ, दीस आर एक्सक्लेमेटरी वर्ड. हाणे जेको सेकंड सेंटेंस तव्हांजो आहे वाओ, तव्हां एक्सक्लेमेशन मार्क इते भी यूज़ करे सघो पिया. वाओ, ही हैज जस्ट वन अ गोल्ड मेडल. ओ जे फुल स्टॉप में वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड खां पोइ तव्हां एक्सक्लेमेशन मार्क भी ॾेई सघो था. नोटिस दैट ईच ऑफ द सेंटेंस of these examples contain both a subject and a verb, which is still a requirement of a complete sentence. And जेकी भी sentence imperative, exclamatory, interrogative or assertive, ये जेके sentence ये complete thought ॾींदा आहिनि. Exclamatory sentences are often used in a casual conversation and in written dialogue to show emotion, but they are not typically useful in academic or expository writing. ये मोस्टली असां जॾहिं डायलॉग राइटिंग लिखंदा आहियूं न, पोइ उन में असां इमोशन शो कंदा आहियूं. तव्हां नॉवल पढ़िया हूंदा अक्सर, उन में हिकिड़ो कैरेक्टर हूंदो आहे
वरी ॿियो हूंदो आहे, वरी सेम वन हूंदो आहे A B A B, लेट्स सपोज या नेम्स। त जॾहिं उहे डायलॉग चईंदा आहिनि त कॾहिं कॾहिं उनमें फीलिंग्स अची वेंदियूं आहिनि, केरु कंहिंसां गुस्से सां ॻाल्हाईंदो आहे या को ख़ुशी जो इज़हार कंदो आहे, त पोइ असां हुन में लिखंदा आहियूं एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, Hurrah, I have won the match. Oh, he has died. त ईअं असां हुन में शो कंदा आहियूं। नोट, हाँ इहे त जेके तव्हांजा टाइप्स हुआ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस हुया, ऐं हिकिड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट आहे जेको हुननि जो, इन अदर वर्ड्स अ कंप्लीट सेंटेंस मस्ट हैव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब हिकिड़ो जेको तव्हांजा सेंटेंस आहे इंग्लिश में कंप्लीट सेंटेंस, उनमें हे शइ हुअण लाज़मी है। नंबर 1, first, in written form, a sentence begins with a capital letter and ends with the period, a full stop, a note of interrogation means question mark, or a note of exclamation, an exclamation mark. ये जेके तव्हांजो सेंटेंस अगर जेकॾहिं आहे त उनमें असां डिपेंड थो करे सेंटेंस जे फंक्शन सां, त उते फुल स्टॉप लॻंदो या क्वेश्चन मार्क लॻंदो, एक्सक्लेमेशन मार्क लॻंदो। So these are the examples, these are characteristics. So depending on the function of a sentence, we use punctuation mark. ये punctuation marks आहिनि जेके असांखे यूज़ करना। Second, it must express a complete thought, not fragmented. जेको ये sentence हुया interrogative, or we can say interrogative or imperative, assertive, ये जेके भी sentence आहिनि ये सब complete thought show कंदा आहिनि। incomplete thought या incomplete sense इनमें न हूंदा, complete meaning हूंदी आहे। Third, it must contain at least one subject and one verb comprising an independent clause। असां पढ़ियो आहे त independent clause हिकिड़ो complete sentence हूंदो आहे, part हूंदो आहे, जंहिंजी पंहिंजी हिकिड़ी meaning हूंदी आहे, वो इंडिपेंडेंट हूंदो आहे। अगरि असां उन अलॻि पढ़ंदासीं त उन कंप्लीट मीनिंग ऐं सेंस असांखे मिलंदो। त इहे उहे जेके बि सेंटेंस आहिनि, चाहे इम्परेटिव हुजे, चाहे तव्हांजो इंटरोगेटिव हुजे, असर्टिव हुजे, ये जेके या एक्सक्लेमेटरी हुजे, ये जेके भी सेंटेंस आहिनि, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हूंदा आहिनि, कंप्लीट सेंटेंस हूंदा आहिनि। इनमें सब्जेक्ट हूंदो आहे ऐं वर्ब, ऐं कॾहिं कॾहिं सब्जेक्ट हिडन भी हूंदो आहे, जेको अंडरस्टूड आहे यू। Now we are going to start exercise, a very short and easy exercise, तमाम simple exercise है हिकिड़ी, पोइ असां वधीक further types of sentence वेंदासीं उन्हनि जे categories में। हाणे हिकिड़ी simple exercise है, तव्हांखे identify करणो आहे त इहो sentence कहिड़े type जो आहे। Now you have to only identify whether it is declarative, declarative means assertive or statement, second is imperative, third is interrogative, and last is fourth is exclamatory। हाँ तव्हांखे ॿुधाइणो आहे त कहिड़ो sentence 1 2 3 etc. इन sentence जे end में तव्हां लिखंदो only declarative। अगर declarative means D भी लिख सघो था। हाणे जल्दी जल्दी comment में तव्हां लिखो त what it the type is, what type of sentence it is। हाणे मां sentence पढ़ी रहियो आहियां, तव्हां इन जी पिक्चर पढ़ी छॾियो या तव्हां इन जा आंसर डायरेक्टली comment में लिखो। नंबर 1 declarative, number 2 imperative, number 3 in लिखो। So I'm reading it. Number 1, how well she sings, how well she sings। Number 2, what is your name? 3, did I say anything to make you angry? Number 4, what is your name? These are two sentences are same, second and fourth I guess। 5th, who told you this? Number 6, Shafiq is a successful writer। Number 7, it is raining cats and dogs, it is raining cats and dogs। Number 8, I want to become a writer। Number 9, she does not eat meat or fish। Number 10, go at once। 11, bring me that file। I repeat these sentences, अगर कहीं रहिजी विया आहिनि, कंहिं न लिखी सघियो आहे त quickly note down, write down and comment में लिखो ये number 1 the कहिड़ो type आहे, number 2 number 3। they are very simple in order to clarify your concept, to give revision, बस इन्हीं तरह से ये लिखा simple sentence। So I'm repeating, how well she sings। Number 2, what is your name? Number 3, did I say anything to make you angry? Number 4 के मां चाहूं तो may I know your good name, change तक नहीं लगी। Number 5,
who told you this? Number 6, Shafiq is a successful writer. Number 7, it is raining cats and dogs. And cats and dogs basically pro raining cats and dogs you idiom hai. Idiom वे अल्फाज या वे group of words जेके चीजन या pair या phrases जिनी meaning literal न हुजे. It has figurative meaning, man meaning भी हुजे. It हाने में raining cats and dogs सा माना raining heavily. तेज बरसात था. ये इंशाल्लाह सा discuss करना सी idioms at the end of our grammar portion. In next class, it is raining cats and dogs. Number 8, I want to become a writer. Number 9, she does not eat meat or fish. Number 10, go at once. 11, bring me that file. Okay, so 12 is there and 13th. Okay, 12 you note down. Okay, 12 is there. 13 is get lost. Get lost. 14 is fetch me a glass of water. 15 is please be seated. Okay, and 16 is sit down. 17 she writes with her left hand. ठीक है मानो left handed होना है कि right handed. आई तामा के left handed आए. I am left handed. So this is the अक्सर चलना ना left handed मानो जो कहना वे they are good at thinking or like something. So there are two types, left handed, right handed. So she writes with her left hand. What a tragedy. How beautiful she is. I have 2 sisters. Number 21, how ridiculous this is. 22, I have lost my way. मैं एक दफा repeat करा तो जे न लिखियान quickly note down. 11 sentences exercise में 11B slide में total 22 sentences. Just write down which type of sentence it is. In whether you identify the type of sentence or not. Number 1, how well she sings. Number 2, what is your name? Number 3, did I say anything to make you angry? Number 4, what is your name? Similar. Number 5, who told you this? Number 6, Shafiq is a successful writer. 7, it is running cats and dogs. 8, I want to become a writer. Number 9, she does not eat meat or fish. Number 10, go at once. Number 11, bring me that file. And number 12 is there. 13, get lost. 14 is fetch me a glass of water. 15, please be seated. Number 16, sit down. 17, she writes with her left hand. And number 18, what a tragedy. And 19, how beautiful she is. 20th, I have 2 sisters. 21, how ridiculous this is. And last is, I've lost my way. Exercise number 1, types of sentence. So let's see whether you have written answers in comment. Comment with the king get right. I want to see this. Okay, now the comments are very good. So now let's start checking. Taja comment, yes. Okay, very good. Exclamatory, good, very good. Okay, now let's start the answers. Identify yourself as well and see where you are. Okay, so number 1 is how well she sings. It is exclamatory. And so an exclamation mark bhi aahe and your sudden feelings surprise show bhi kare. So that is why it is exclamatory sentence. And number 2 is what is your name? You simple aahe. And number 3rd aahe did I say did sa shoot you? I say anything to make you angry? Question sawal aahe. Interrogative. 4th is same. What is your name? Interrogative. 5th, I who told you this? Interrogative. 6th is declarative, assertive, simple statement. Number 7 जो है
वो भी डिक्लेरेटिव है, फुल स्टॉप ते आहे, 8 डिक्लेरेटिव है, 9 डिक्लेरेटिव। हाणे जेको 10 सेंटेंस आहे इहो तव्हांजो आहे इम्परेटिव, माना हिकिड़ो कमांड ऑर्डर शो थो करे, गो एट वंस। 11 भी आहे इम्परेटिव, इहो भी ब्रिंग मी दैट फाइल। इन में इहो भी इम्परेटिव आहे, इट शोज command, or we can see the request as well. So both depending on the feelings, the kede way mein chahta, please bring me that file, yeah, bring me that file, but it is a kind of, it's a type of imperative. ठीक है, 13 12 sentence था जो declarative है, 13 get lost, it is a command कर रहे हैं, get lost imperative है, bring me or fetch me a glass of water imperative है, असां कहेंगे command था ॾियूं, order था ॾियूं, please be seated, हाणे please a request, इहो imperative आहे, sit down imperative आहे, and 13 declarative आहे, assertive। हाणे what a tragedy, हाणे इहो माना इमोशन डिपेंड थो करे फीलिंग असां कीअं चऊं था, what a tragedy, त हिते एक्सक्लेमेटरी मार्क आयो आहे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आहे, how beautiful she is, इहो भी एक्सक्लेमेटरी मार्क आहे, I have 2 sisters, इहो सिंपल सेंटेंस आहे, ridicule, how ridiculous this is, एक्सक्लेमेटरी। हाणे इंसान शो था कयूं हिन में सडन फीलिंग्स, अचानक कुछ थी वञे न, दैट्स I have lost my way, इहो जेको आहे सिंपल सेंटेंस आहे, डिक्लेरेटिव। Now let's start types of sentences on the basis of structure। वो जेके types हुया उहा हुया function जे हिसाब सां, 4 क़िस्म हुया। हाणे असां चवंदा the most complicated and technical part, हाणे तव्हांखे रुॻो इनखे सम्झण जी ज़रूरत आहे, हिकु दफ़ा पंहिंजा कॉन्सेप्ट क्लियर करे छॾियो त basically there are 4 types। Number 1 simple sentence, number 2 compound sentence, number 3 complex sentence, and last 4 is compound complex sentence। ये 4 types and sentence जा on the basis of structure, ऐं जेको असां पहिरियां डिस्कस कया वो on the basis of function। हाणे simple sentence छा आहे? A simple sentence, it must have a single clause, a single verb which is independent and it cannot take another clause। and a simple sentence हुंदो आहे वो just हिकिड़ो complete sentence हुंदो आहे, complete clause हुंदो आहे, हिकिड़ो clause हुंदो आहे, उनमें complete sense हुंदो आहे, complete meaning हूंदी आहे, वो independent हुंदो आहे, वो कंहिं डिपेंड न कंदो आहे, उनजी पंहिंजी complete meaning हूंदी आहे, and it cannot take another clause, वो कंहिं ॿिए जुमिले ते डिपेंड न कंदो आहे, वो इन करे इंडिपेंडेंट आहे। जैसा चवंदा आहियूं त दैट, इहो असां पहिरियों डिस्कस भी कयो आहे, व्हेन आई से आई एम इंडिपेंडेंट स्टूडेंट, आई एम एन इंडिपेंडेंट लर्नर। इंडिपेंडेंट माना मां पंहिंजो पाण पढ़ंदो आहियां, पाण सिखंदो आहियां, कंहिं ते डिपेंड न कंदो आहियां, ऐं ॿियनि जे बग़ैर मां पढ़ी सघां थो, विदाउट एनी हेल्प। सो आई एम इंडिपेंडेंट। ईअं क्लॉज बि इंडिपेंडेंट हूंदो आहे तव्हांजो, वो सेंटेंस जेको इंडिपेंडेंट क्लॉज हुजे, कंप्लीट सेंटेंस हुजे, जंहिं कंप्लीट मीनिंग हुजे, that is called simple sentence। For example, I am writing a letter, I always wanted to become a writer। so in a complete तव्हांजी thought आहे, subject verb or object, you can see जेके simple sentence आहिनि, जेको हिकिड़ो sentence हूंदो आहे complete, उनखे चयो वेंदो आहे simple sentence, and they are also called an independent clause। ॿियो चई सघूं था, my name is Shafiq Ahmed, I am teaching English to my students। okay, तो ये जेके simple sentence आहिनि, जेके तमाम simple thought हूंदी आहे इनमें, ऐं short sentence हूंदा आहिनि, they are simple sentence। A simple sentence has the most basic elements that make it a sentence: a subject, a verb, and a complete thought। वो जुमलो जंहिंमें subject हुजे, verb हुजे, complete thought हुजे, उनखे असां चवंदासीं simple sentence। For example, Ali waited for the train। Ali train जो इंतजार कयो हो, हाणे मुकम्मल जुमलो आहे, इंडिपेंडेंट आहे, इनमें पूरी मीनिंग ऐं सेंस मिले थी, हिकिड़ो ई सेंटेंस आहे, त इहो त मीन्स इनमें अली सब्जेक्ट आहे ऐं वेटेड वर्ब आहे, सेकंड फॉर्म आहे पर वर्ब आहे, त सब्जेक्ट भी आहे, वर्ब आहे, इट गिव्स कंप्लीट मीनिंग सेंस, it is, so that is why it is called simple sentence। now the train was late, train late थी वई हुई, and so the जुमले पूरी complete meaning ठहे थी, sense ठहे थो। the train is your subject,
and was is helping verb पर ये verb आए तब पूरी meaning मिलेगी. So these both are examples of simple sentences. The use of subjects, compound word, prepositional phrase such as at the bus station and other elements help lengthen simple sentence, but the simple sentences often are short. And अगर असां compound verbs use कयूं, prepositional phrases use कयूं जुमले में त उहो जुमलो lengthy थी वेंदो. हूंदो simple sentences पर वो lengthy थी वेंदो. जेके simple sentence हूंदा आहिनि mostly उहे short हूंदा आहिनि. अगर short हूंदा त उन meaning सुठी हूंदी. The use of too many simple sentences can make writing choppy and can prevent the writing from flowing smoothly. अगर तव्हां हिकिड़े जुमले में इलाही सारा जुमला लिखंदो, phrases, prepositional phrases, compound word, especially simple sentence में त उन जी meaning आहे उहा हिकिड़ी smooth न हूंदी. Effective sentence उहो न थींदो. त इन करे जेके simple sentence हूंदा आहिनि उहे mostly simple thought हूंदा आहिनि, उहे short हूंदा आहिनि ऐं easy. A simple sentence can also be referred to as an independent clause. मां तव्हांखे पहिरियों ई ॿुधायो हुयो त simple sentence खे असां independent clause बि चई सघूं था. इन करे इन में subject, verb, complete thought हूंदी आहे ऐं complete meaning ॾींदो आहे. इहो कंहिंजो depend कोन हूंदो आहे sentence. It is referred to as independent because while it might be a part of a compound or complex sentence, it can also stand by itself as a complete sentence. हाणे जेको simple sentence आहे या independent clause आहे, असां अॻिते हली पिया टाइप्स पढ़ंदासीं, उन में असां इहे सिखंदासीं त जुमले में हिकिड़ी जुमले में independent clause बि थी सघे थो, dependent clause बि थी सघे थो, depends on the type of sentence. But in spite of it, independent clause has complete meaning. अगर उहो ॿियो टाइप अची वञे त उन में सिंपल सेंटेंस हुजे, वरी ॿियो क्लॉज हुजे जो डिपेंडेंट क्लॉज हुजे, पर उन जुमले में बि इंडिपेंडेंट क्लॉज जी पंहिंजी कंप्लीट मीनिंग हूंदी. So this was simple sentence, also known as an independent clause because it gives complete meaning. They are mostly short sentences. हाणे जो कंपाउंड जैसे ना कंपाउंड वर्ड माना ॿ लफ़्ज़ मिली पाण में ठहनि त उहो कंपाउंड वर्ड हूंदा आहिनि. त इहे कंपाउंड सेंटेंस बि हूंदा आहिनि. जीअं मां तव्हांखे एग्ज़ाम्पल ॾिनो वर्ड जो, सिमिलर तव्हांखे कंपाउंड सेंटेंस. अगर कंपाउंड वर्ड ॿ लफ़्ज़ मिली हिकिड़ो लफ़्ज़ ठाहिनि था त कंपाउंड सेंटेंस ॿ सेंटेंस मिली हिकिड़ो कंप्लीट सेंटेंस ठाहिनि था. A compound sentence must have more than one independent clause with no dependent clause. Compound sentence उहो आहे जंहिंमें उन जुमले में ॿ कंपाउंड में ॻाल्हि कई ॿ independent clause हुजनि ऐं को डिपेंडेंट क्लॉज न हुजे. उन सेंटेंस में तव्हांजा जेके ॿ क्लॉज हूंदा उहे ॿई छा हूंदा? इंडिपेंडेंट. Some specific conjunctions, punctuation, or both are used to join together these clauses. In a bin clauses के जेके independent उन्हनि खे join करण लाइ असां यूज़ कंदा आहियूं conjunctions, punctuation, etc. For example, I always wanted to become a writer. मां हमेशा राइटर थियणु चाहियां पियो. मां चाहींदो हुयुसि त मां हमेशा ई चाहींदुमि त मां राइटर थियां. And she wanted to become a doctor. I who doctor थियणु चाहे पई. हाणे तव्हां ॾिसो, I always wanted to become a writer. इहो कंप्लीट सेंटेंस आहे जंहिंजी कंप्लीट मीनिंग आहे. अगर मां हिनखे अलॻि पढ़ां त हीउ मीनिंग ॾिए थो I always wanted to become a writer. हाणे कंप्लीट मीनिंग आहे, सेंस आहे. इहो इंडिपेंडेंट क्लॉज आहे. Independent clause खां पोइ ईंदो comma, then we will add conjunction, and then we'll write independent clause. She wanted to become a doctor. She wanted to become a doctor. I always wanted to become a writer. ये ॿई जुमला आहिनि, clause आहिनि, two independent clause आहिनि जेके join आहिनि, connecting word, linking word, joining word, conjunction, and some. So these are both independent. I repeat, compound sentence उहो sentence आहे जंहिंमें ॿ independent clause हुजनि, combine हुजनि, join हुजनि, connect थियनि कंहिंसां conjunction सां, ऐं उन खे चइबो आहे compound sentence.
हाणे कंपाउंड सेंटेंस जेको सो उन में तव्हांजा ॿ इंडिपेंडेंट क्लॉज हूंदा आहिनि, मतिलबु ॿ कंप्लीट सेंटेंस हूंदा आहिनि, ऐं अक्सर वो कनेक्ट हूंदा आहिनि कंहिंसां, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सां। हाणे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहिड़ा आहिनि? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, ईयर, सो। फॉर एग्जाम्पल ऑफ हाणे कंपाउंड सेंटेंस जा कुछ एग्जांपल्स तव्हांखे ॿुधायां। शफीक वेटेड फॉर द ट्रेन बट द ट्रेन वाज लेफ्ट। हाणे शफीक जेको आहे सो ट्रेन जो इंतज़ार कयो हो। हाणे इहो बि कुझु जुमिलो आहे, पूरो कंप्लीट मीनिंग ॾिए थो, सेंस ॾिए थो, बट पर हाणे इहो कंजक्शन आहे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आहे। द ट्रेन वाज लेट, ट्रेन लेट थी वई हुई या लेट आई हुई ट्रेन, लेट पहुची हुई। हाणे इहे ॿ जेके इंडिपेंडेंट क्लॉज आहिनि, शफीक वेटेड फॉर द ट्रेन वाज लेफ्ट, इहे कनेक्ट आहिनि बट सां। बट माना कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ऐं इन ॿिन्हिनि जी अलॻि अलॻि मीनिंग निकिरे थी। सो तव्हां ॾिसी सघो था, दिस इज एग्जांपल ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। हाणे ॿियो एग्जांपल था पढ़ूं। आई लुक फॉर शफीक एंड निसार एट द बस स्टेशन but they arrived at the station before noon and left on the bus before I arrived. हाँ जो फर्स्ट पार्ट आहे, I look for Shafiq and Nisar at the bus station. मां ॻोल्हियो शफीक ऐं निसार खे बस स्टेशन ते। हाणे कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉज आहे जंहिंजी मीनिंग आहे बट। हाणे इहो कंजक्शन। They arrived at the station before noon and left on the bus before I arrived. इन जी हिकिड़ी कंप्लीट मीनिंग आहे। So in simple we say these are compound sentences. These are those sentences which have two independent clauses connected by conjunction or linking group. हाणे थर्ड टाइप आहे तव्हांजो स्ट्रक्चर जे हिसाब सां सेंटेंस जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स जी मीनिंग तव्हां सम्झी सघो था? या असां अक्सर चवंदा आहियूं, अगरि कंहिंखे अचे थी मीनिंग त कॉमेंट में लिखे। असां चवंदा आहियूं यार ॾाढो कॉम्प्लेक्स शिकार है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आहे। त कॉम्प्लेक्स मामला समथिंग विच इज डिफिकल्ट। हिते ॾिसो छा मीनिंग आहे। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज मेड अप ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस कनेक्टेड टू इट। हाणे कंपाउंड में त इहो हुयो त ॿ सेंटेंस या ॿ क्लॉज जॉइन हूंदा, जुमिले में हूंदा, पर उहे ॿई छा हूंदा? इंडिपेंडेंट। पर हिते ई न आहे, इट इज अपोज। हाणे हिन में इहा आहे त हिकिड़ो त इंडिपेंडेंट हूंदो, पर ॿियो या हुन खां वधीक ॿिया टे जेके हूंदा उहे सभु डिपेंडेंट क्लॉज हूंदा। उनखे चइबो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अ डिपेंडेंट क्लॉज इज सिमिलर टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर असां ॾिसूं त क्लॉज त कंप्लीट हिकिड़ो हूंदो आहे, पर सिमिलरिटी आहे थोड़ी। त डिपेंडेंट क्लॉज तव्हांखे ॾिसण में इंडिपेंडेंट क्लॉज लॻंदो, पर और कंप्लीट सेंटेंस, ये ॿई कंप्लीट सेंटेंस आहिनि, but it lacks one of the elements that would make it a complete sentence. हाणे फ़र्क़ु इहो आहे त आहिनि ॿई क्लॉजेस, पर जेको डिपेंडेंट आहे उनजी कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस कोन हूंदो आहे, ऐं इंडिपेंडेंट जी कंप्लीट मीनिंग हूंदी आहे। फॉर एग्जांपल डिपेंडेंट क्लॉजेस जा ये असां पहिरियों पढ़िया आहिनि, पर थोरो रिव्यू थी वञे। बिकॉज़ शफीक एंड निसार अराइव्ड एट द बस स्टेशन बिफोर नून। हाणे छाकाणि त शफीक ऐं निसार बस स्टेशन ते नून खां पहिरियों पहुची विया। छा मतिलबु? while he waited at the train station, जॾहिं त हू ट्रेन ते वेट करे रहियो हो। इन जो को सेंस कोन्हे, मां डिपेंडेंट आहिनि। after they left on the bus, इन जी का मीनिंग कोन्हे। dependent clauses such as those above cannot stand alone as a sentence, but they can be added to an independent clause to form a complex sentence. पर असां जेकॾहिं इन्हनि सां हिकिड़ो इंडिपेंडेंट क्लॉज मिक्स कंदासीं या जॉइन कंदासीं त पोइ थी सघे थो जुमिले जी मीनिंग कंप्लीट या सेंस कंप्लीट ठहंदो। अदरवाइज डिपेंडेंट क्लॉज जी अलॻि का बि मीनिंग न हूंदी आहे। Dependent clauses begin with subordinating conjunction. Below are some of the most common conjunction: after, although, as, because, before, even though, if, since. ये उन्हीं subordinate conjunction हैं जेके dependent clause जी शुरुआत में ईंदा आहिनि। इहा हिकिड़ी तव्हांजी हिकिड़ी आइडेंटिफिकेशन आहे। अगरि तव्हां dependent clause
आइडेंटिफाई द करण चाहियो त पहिरियों हुन में इहो वर्ड्स न ॿियनि do, unless, until, when, whenever, whereas, wherever ऐं while ठीक है. So these are the words which are joining. हाणे complex sentence जे बारे में तव्हां कुझु डिस्कस कंदो हलां. A complex sentence joins an independent clause with one or more dependent clauses. हिकिड़ो जेको तव्हांजो हूंदो उहो complex sentence जेको हूंदो उन में हिकिड़ो independent clause हूंदो ऐं ॿिया टे या जेतिरा बि जेके clause हूंदा उहे सभु हूंदा dependent. The dependent clauses can go first in the sentence followed by the independent clause as in the following. हाणे important point हिते discuss करण वारो आहे उहो इहो आहे जेकॾहिं तव्हां डिपेंडेंट क्लॉज खे पहिरियों लिखो पोइ इंडिपेंडेंट क्लॉज खे या पहिरियों इंडिपेंडेंट क्लॉज खे लिखो पोइ डिपेंडेंट क्लॉज खे त को फर्क सेंटेंस में कोन पवंदो. इट्स द सेम थिंग पर पंक्चुएशन मैटर्स. When the dependent clause comes first, a comma should be used to separate the two clauses. हाणे जॾहिं असां पहिरियों डिपेंडेंट क्लॉज जॾहिं जुमिले में लिखंदासीं पहिरियों पार्ट डिपेंडेंट क्लॉज हूंदो उन खां पोइ हमेशह ईंदो कॉमा ऐं पोइ असां लिखंदासीं ॿियो इंडिपेंडेंट क्लॉज. हाणे फॉर एग्जांपल because Mary and Samantha arrived at the bus station before noon, I did not see them at the station. हाणे तव्हां ॾिसो जेको पहिरियों पार्ट आहे उहो डिपेंडेंट क्लॉज आहे. Because Mary and Samantha arrived at the bus station before noon. हाणे जॾहिं डिपेंडेंट क्लॉज आहे त उन खां पोइ कॉमा अची वियो. I did not see them at the station. ऐं उन खां पोइ अची तव्हांजो independent clause. New example. While he waited at the train station, Joe realized that the train was late. इन में जेको असां डिपेंडेंट क्लॉज पहिरियों आयो आहे while he waited at the train station उन खां पोइ कॉमा ऐं पोइ असां लिखो जो realized that the train was late. पोइ जो realize कयो त जेको ट्रेन हुई उहा लेट हुई. Third, after they left on the bus, हाणे इहो डिपेंडेंट क्लॉज आहे न कॉमा आहे. Mary and Samantha realized that Joe was waiting at the train station. हाँ ये जेके three examples हैं इनमें सभी में पहिरियों आयो dependent clause, then comma, and then we have used independent clause. अगर असां पहिरियों dependent clause लिखंदासीं त उनजो structure इहो आहे त dependent clause, comma, and independent clause. Conversely, the independent clause can go first in the sentence followed by the dependent clause as in the following. मतलब अगर पहले ही डिस्कस कयो हो तो जुमले में अगर तव्हां पहिरियों डिपेंडेंट क्लॉज लिखो ऐं पोइ इंडिपेंडेंट या पहिरियों डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पोइ डिपेंडेंट त को फर्क न आहे. इट्स द सेम थिंग पर पंक्चुएशन में फर्क आहे. हाणे पहिरियों पार्ट असां डिस्कस करे छॾियोसीं. नेक्स्ट, when the independent clause comes first, a comma should not be used to separate the two clauses. जॾहिं तव्हां पहिरियों इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखंदा त उन खां पोइ कॉमा ॾियण जी ज़रूरत न आहे. पहिरियों इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखी उन खां पोइ डायरेक्ट तव्हां लिखंदा dependent clause. For example, I did not see them at the station because Mary and Samantha arrived at the bus station before noon. हाणे हिते because खां पहिरियों असां कॉमा न ॾिनो पर अगरि because खां शुरू कयूं त noon खां पोइ असां मथे जीअं कॉमा ॾिनो आहे. तव्हां ॾिसी सघो था पहिरें एग्जाम्पल में because Mary and Samantha arrived at the bus station before noon त कॉमा आयो पर जॾहिं अगरि इंडिपेंडेंट क्लॉज पहिरियों ईंदो त कॉमा जी ज़रूरत न आहे. सेकंड एग्जाम्पल, Joe realized that the train was late while he waited at the train station. So there is no comma. Third example, Mary and Samantha realized that Joe was waiting at the train station after they left on the bus. In short, I will repeat that if the sentence comes first and which is dependent clause, then you will use comma, then independent clause. अगर जेकॾहिं जुमिलो पहिरियों तव्हांजो independent clause आहे उन खां पोइ comma जी ज़रूरत कोन्हे. Independent clause and then dependent clause. I hope it is clear. Okay, last type of sentence which is compound complex sentence.
हाणे compound complex sentence छा आहे? A compound complex sentence or complex compound sentence is a mixture of the features of compound and complex. जेको तव्हांजो compound sentence हुयो, जेको second type हुयो, third complex हुयो, उन ॿिन्ही जे combination खे चइबो आहे compound complex sentence. So it must contain at least two independent clause and at least one dependent clause. इनमें compound में मुराद हुयो ब dependent clause, sorry independent clause. तो इन मतलब आहे इन उन sentence में ब independent clause हूंदा ऐं घटि में घटि हिकिड़ो dependent clause हूंदो, त उन्हें खे असां चवंदासीं compound complex sentence. Example, I know that you always wanted to become a writer, but I always wanted to become a doctor. I repeat, I know that you always wanted to become a writer, but I always wanted to become a writer. मुझे खबर आ त तू जेको आहे सो हमेशा राइटर थियण पियो चाहीं ऐं मां हमेशा डॉक्टर थियण पियो चाहियां. Here, one dependent clause is followed by a complex connector and two independent clauses with a compound conjunction between them. हाणे तव्हां ॾिसो त जेको पहिरियों पार्ट आहे I know, हाणे छा ख़बर आहे मूंखे? मूंखे न आहे ख़बर. अगरि मां चवां I know, हाणे I know छा? मूंखे कुझु न को, it's a sentence but it is not giving complete sense meaning. I know. Use no dependent clause that you always wanted to become a writer. इहो पूरो complete meaning ॾे थो. It is independent clause. उन खां पोइ आहे but, उहो तव्हां छा आहे? Conjunction. वरी ॿियो clause आहे I always wanted to become a writer. हाणे इहो बि independent clause आहे. हाणे ईअं चई सघूं था dependent clause, independent clause, conjunction and independent clause. इन जुमले में ॿ independent clause आहिनि ऐं हिकिड़ो dependent clause आहे. Here, one dependent clause is followed by a complex connector and two independent clauses with a compound conjunction between them. An example तव्हांखे ॾियां compound complex. छो त अक्सर करे तव्हांजे एग्ज़ाम्स में ईंदा आहिनि, ॿियनि एग्ज़ाम्स में बि it is very important. हाणे इहे असांखे कॾहिं कॾहिं कंफ्यूजन थी वेंदी आहे त कंपाउंड ऐं कॉम्प्लेक्स सम्झी था. वरी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हिकिड़ो कंपाउंड आहे, वरी हिकिड़ो कॉम्प्लेक्स आहे, ऐं उन अलावा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स अची वञे सो इट क्रिएट्स कंफ्यूजन. हाणे तव्हांखे एग्ज़ाम्पल ॾियां लास्ट जेको असां टाइप पढ़ियो सेंटेंस जो, शफ़ीक डज़ नॉट लाइक कार्टून्स दो because they are loud, so he does not watch them. शफ़ीक जेको आहे सो कार्टून न ॾिसंदो आहे छाकाणि त उहे लाउड न, लाउड मीन्स इट क्रिएट टू मच नॉइज़, so he शोर हुजण, गोड़ हुजण, so he does not watch them. इन्हे करे वो ॾिसंदो ई न आहे. I repeat, Shafiq does not like cartoons because they are loud, so he doesn't watch them. इन्हे करे शफ़ीक जेको आहे सो कार्टून को ॾिसंदो आहे. ठीक है. ये तव्हांजो सेंटेंस आहे, तव्हां हिन में नोट कयो त मां हिन में डिफरेंट कलर्स कया आहिनि. जेको ब्लैक पार्ट आहे, रेड पार्ट, एंड देन अगेन यू हैव ब्लैक पार्ट. This sentence has two independent clauses and one dependent clause. Any sentence में तव्हांजा ॿ independent clause आहिनि ऐं हिकिड़ो dependent clause. हाणे ॾिसूं त dependent clause कहिड़ा आहिनि, independent. The dependent clause because they are loud, छाकाणि त उहे ते शोर हूंदो आहे, उनमें लाउड गोड़ हूंदो आहे. हाणे इन त का मीनिंग कोन्हे इन करे, बिकॉज़ दे आर लाउड, न को सेंस कोन्हे इन क्लॉज जो, मीनिंग न आहे. हाणे इहो आहे डिपेंडेंट. कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन एज अ कंप्लीट सेंटेंस, इट इज डिपेंडेंट. हाणे इहो डिपेंडेंट सेंटेंस आहे छो त इन का मीनिंग कोन्हे. एज यू हैव प्रोबेबली फिगर आउट द इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. हाणे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कहिड़ा आहिनि ॾिसो. शफ़ीक डज़ नॉट लाइक कार्टून, शफ़ीक खे कार्टून पसंदि न आहिनि. हाणे इहो हिकिड़ो जुमलो आहे, पूरी मीनिंग ॾिए थो, सेंस त चई सघूं था दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज. एंड कंजक्शन आहे, ही डज़ नॉट वॉच देम, ऐं हू जेको आहे सो कार्टून कोन ॾिसंदो आहे, और ही डज़ नॉट वॉच देम, हू कोन ॾिसंदो आहे. हाणे इहे जेके येलो कलर जा मूं जेके हाईलाइट कया आहिनि, दीस टू आर बेसिकली कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, कंप्लीट, दे गिव कंप्लीट सेंस. हाणे इहे ॿई जेके टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आहिनि ऐं हिकिड़ो जेको हिन में आहे उहो डिपेंडेंट क्लॉज आहे.
So this is example of compound complex sentence. And ये चार तव्हांजा हुया type on the basis of structure. पहिरियों जेको असां डिस्कस कया on the basis of function हुया. Now exercise number 1, sentences. Simple, compound or complex. And a little short exercise here is simple because we know about many things. But the some confusion because they look similar. You need to assess yourself. Concept clear and simple, compound or complex. So write an answer in comment. There are hardly 10 sentences. So let's start. Write sentence and write answers in comment. और comment में जरूर लिख जो तो number 1. अगर let's suppose simple है तो लिखना number 1 simple. अगर compound है तो number 1 compound. and अगर complex है तो 1 complex. Just simple, ठीक है? Now let's start. Number 1, we have to go to bed when the clock chimes 10 o'clock. Number 2, my job is very difficult, but I really enjoy going to work every day. Number 3, the big brown dog ran after the blue and red ball. Number 4, Shafiq and Nisar rode their bicycles after they ate lunch. Number 5, the teacher and the principal met in the hall near the library. And in Anjani sentence, repeat to kaya. There are total 10 sentences. You need to identify which sentence is simple, which is compound, and which is complex. Now let's see. Just I लिखिए sentence. Now comment में answers लिखिए. How many of you are participating? Now let's start now. Okay. So I repeat. Number 1, we have to go to bed when the clock chimes 10 o'clock. Number 2, my job is very difficult, but I really enjoy going to work every day. Number 3, the big brown dog ran after the blue and red ball. Number 4, Shafiq and Nisar rode their bicycle after they ate lunch. Then we have number 5, the teacher and the principal met in the hall near the library. One sentence here, quickly write down. Okay, बाकी 5 sentence अगर आपने नाम न लिखा तो please take a picture. Okay, last 5 sentences. Many brave soldiers fought in the war and they received medals. Number 6, many brave soldiers fought in the war and they received medals. Number 7, the drummers played a long time, but the piano players stopped early. Number 8, before the queen rode in the parade, she gave a speech. Number 9, after midnight, the ghost will come out of the haunted attic. Number 10, she dropped the pan and the plate, but she held onto the spoon. Okay, so mark it up, repeat though you write down answers whether they are simple, compound or complex. Number 6, many brave soldiers fought in the war and they received medals. Number 7, the drummers played a long time, but the piano players stopped early. Number 8, before the queen rode in the parade, she gave a speech. Number 9, after midnight, the ghost will come out of the haunted attic. Number 10, she dropped the pen and the plate, but she held onto the spoon. Comments comments में answer लिखो जल्दी. And now let's see that how many of you understand type of sentences. So I hope you're ready. Comments में Achanda, very good. Answers Achanda. So it means you are taking keen interest. Now an interest ahe. Exactly. Okay. Can you repeat the number?
First, the first sentence is we have to go bed when the clock times not 10 o'clock. हाँ ये complex sentence आहे वो इन्हीं करी the complex sentence में हिकिड़ो तव्हांजो आहे dependent ॿियो independent. We have to go bed. त ये हिकिड़ी complete meaning अचे थी. When the clock times 10 o'clock. हाँ ये complex आहे छो त उन्ही complete meaning ॿिए part ई न आहे. Number 2, my job is very difficult, but I really enjoy going to work every day. And my job is difficult. I really enjoy going to work every day. ये भाई complete independent clause हैं जेके but सां join हैं तो ये compound है. Number 3, the big brown dog ran after the blue and red ball. ये एक simple sentence है जिनकी complete meaning है sense है. So we can say that this is simple sentence. 4, Shafiq and Nisar rode their bicycles after they ate lunch. हाँ यो जो sentence आहे Shafiq and Nisar rode their bicycle. हाँ यो की complete meaning आहे यो independent आहे. And जो next part आहे after they ate lunch यो तव्हांजो आहे dependent clause. So independent is joined with the dependent. It means it is a complex sentence. Number 5, sorry. The teacher and the principal met in the hall near the library. And you could simple sentence आहे, short sentence आहे, incomplete meaning आहे, को इनमें dependent, independent या independent, dependent sentence ना है, simple one sentence आहे. So that's why it is simple sentence. Next is number 6. Many brave soldiers fought in the war and then they received medals. Compound आहे. इन्हीं करे त जेके ॿ clauses आहिनि उहे complete आहिनि ऐं उहे join आहिनि conjunction and सां. जी number 1 आहे many brave soldiers fought in the war. ऐं second part आहे they received medals. हाणे इहे ॿई complete independent clause आहिनि ऐं इहे join आहिनि and सां. So that is why this is compound sentence. Number 7, the drummers played a long time, but the piano players stopped early. इतने ये जो बस sentence in the drummers played a long time, and the piano players stopped early. And ये पूरी complete meaning sense आहे. And ये join and connecting word, linking word or joining word, but सा इन्हें करिए compound है. Number 8. Before the queen rode in the parrot, she gave a speech. ये complex नहीं करे आहे तो इन्हें में जो पहला part आहे, this is dependent. Before the queen rode in the parrot, इन्हें पांच की complete meaning ना है. ये second identification किया है तो इन्हें खां पोइ comma ब आहे. And then she gave a speech. She gave a speech or she delivered a speech. इन्हें जो sense आहे, meaning आहे तो ये independent clause आहे. So that is why we call it complex sentence. Number 9. After midnight, the ghost will come out of the haunted attic. ये simple sentence है, simple thought है, complete इनमें को dependent या independent clause कौन है? It itself is a independent clause. Last है, she dropped the pen and the plate, but she held on to the spoon. And last देखो she dropped the pen and the plate आहे हिकिड़ो independent clause आहे. She held on to the spoon. ये भी independent clause आहे ऐं ये connect आहिनि but सां ऐं जेको but जेको आहे सो conjunction आहे त इन्ही करे इनखे compound sentence चयो वेंदो आहे. आखिर में वरी मां तव्हांखे thanks कंदुमि and I really appreciate your hard work, dedication and your comments make us more good to improve ourselves. So keep on asking, keep on taking interest. And any queries share कयो जेके तव्हां WhatsApp number share कयां थो. You just send me a message along with your name and city. त जी तव्हांखे जेके तव्हां कल्ह सवाल कयो हुयो सवाल ईसा खोसो त सर असांखे सिनोनिम एंटोनिम जो बुक खपे. I will share with you. Write my number 0300 937 2262. सुभाणे असां स्टार्ट कंदासीं मॉडल वर्ब्स. अॼु जे टॉपिक जे बारे में तव्हांखे को डिफिकल्टी हुजे you can write in comment and inshallah we will meet tomorrow. Till then, take care.
अल्लाह हाफ़िज़।